What I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made. This quote by philosopher Swami Vivekananda still provokes the ears of every individual who wishes to overcome any difficulty with a fearless attitude. National Youth Day in India is celebrated to remember the legacy of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's life and teachings have encouraged millions across the world. In 1985, the Government of India declared Swami Vivekananda's birthday, January 12, as National Youth Day in honor of the great philosopher and monk. Since 1985, 12th of January is celebrated as National Youth Day all over India. Swamiji was a true karma yogi. He had full faith in the youth of this country. He had a very strong belief that youth can transform the faith of India through their hard work, dedication, and spiritual power. Today, 12th of January, birth anniversary of Swami Vivekananda, let us all pay our humble tribute to this noble soul. And for this, may I humbly request the teachers present here to kindly come forward and do us the honor. Ask nothing, want nothing in return. Give whatever you have to give. It will come back to you in different ways. Swami Vivekananda believed that when we put our heart to something and do our actions selflessly, it often comes back to us in different forms. Let us add more knowledge to the teachings of Swami Vivekananda through a valuable speech. And for this, may I request respected Vibhuti Swine sir to kindly come forward and do us the honor. Please, sir. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଏହି ଯୁବ ଦିବସରେ ଏଲ୍ଆର୍ଡିଏମ୍ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। Arise, awake, stop not till the goal is reached. ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରଂ ଯୁବଧାୟ ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଗେଇ ଚାଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ। ଏହି ବୀର ବାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ବୀର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଶକ୍ତ ଯୁବକ ଦିଅ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯୁବ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯୁବ ମାନସର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ संकोचन माने मृत्यु, संप्रसारण माने जीवन। निजको संप्रसारित कर, निजको विकसित कर, ताहेले युव शक्ति निज भितर रहिथिबा युवकत्व आहुरी आहुरी आगको बढिबो। एक नूतन भारत वर्ष गढिबा पई आम पाखरे अमाप शक्ति जाग्रत हो। विवेकानंद कहउथिले शुद्ध शाकाहारी हे मुंडरे तिलक मारी
दलाल और भंडामी करबा अपेक्षा घुसुरी मांस भक्षण करी पड़िया घंटा घंटा फुटबॉल खेली निज देश चिंता करबा होची आहुरी उन्नत से कौनसी भांडामी को कौनसी प्रकार मिछ स्वार्थग्रामी से प्रसाद नथिले युवक मान को बारंबार आह्वान करथिले उठ जाग एवं आगे चल से दिन चिकागो धर्म सभा जेते बड़े धर्म सम्मेलन सरी स्वामी विवेकानंद थिले शेष प्रवचक हिंदू धर्मर प्रतिनिधि विवेकानंद कही सारा निजक श्रेष्ठ बोली मन कर ख्रीस्टियन धर्मर जाजक कहला स्वामी विवेकानंद तमे सभा शेष आस आपंकर धर्म पुस्तक सभा शेष ही रही सब धर्म पुस्तक तले ही रही तेणु हिंदू धर्म होउची सभा तले तेणु हिंदू धर्म केबे हेले ऊपर नुह आपण कौन कहते विवेकानंद से बुझाई कहीदेले महाशय हिंदू धर्म पुस्तक गीता एमिति एक धर्म पुस्तक जी सबु धर्म को टेकिकी रखी पारे से दिन ख्रीस्टियन जाजकर मुंड खराब हो गला एवं संगे संगे से गीता को काढ़ी आनी पूरी ऊपर रखीदेले विवेकानंद एवं कौन कहते हाँ कौन से धर्म पुस्तक मध्य को प्रवेश करने पूर्व प्रथम ही हिंदू धर्म पुस्तक एवं भगवत गीता को खेले कि अन्य धर्म ग्रंथ भितर को प्रवेश करने पड़ो कौन सी धर्म बड़ नुहे कि कौन सी धर्म छोट नुहे एक कथा कहे हिंदू धर्म तेणु हिंदू धर्म है सब बड़ करताड़ी कंपी उठी से दिन चिकागो धर्म सम्मेलन समस्त से भाई और भूमि कही आपणी नहीं जिते समस्ते सारा प्रणाम कही संबोधन करते माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कही स्वामी विवेकानंद समस्त हृदय को जीति जाइए जो अमेरिका को कोलंबस दीर्घ दिन यात्रा कला आविष्कार करते मात्र 2 मिनिट रे स्वामी विवेकानंद से अमेरिका को आविष्कार करदेले he is the cyclonic hero of America he is the tornado of America अमेरिका प्रत्येक संवाद पत्र आरंभ करी वैद्युतिक गणमाध्यम ठारू आरंभ करी खोदित गणमाध्यम पर्यंत प्रिंट मीडिया ठारू आरंभ करी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर्यंत सबुथिरे विवेकानंदर गौरव गरिमा छाईगला सही होती स्वामी विवेकानंद जी युवक मान प्रति मुहूर्त प्रेरणा देते प्रतिनिधारी मानव जाति को दिग्दर्शन देवाई उद्दिष्ट और आसतु आम स्वामी विवेकानंद को अनुसरण करवा आदर्श अनुप्राणित होगा योद्धा हम निज देश को आगे नवा देशर जो करोना संकट भी आसी आम समस्ते युव बंधु जागृत हो गले निश्चित भाव आसी महामारी दारुण विपद देश को उद्धार कर स्वामी विवेकानंद को महाकाली को आम प्रणाम करी आम पुणी थे से वीर पुरुषंकर वाणी को मन पकड़ा arise awake stop not till the goal is reached अधिष्ठित जागृत प्राप्तवना नवोदय उठ जागृत हो आगे चलो अटकी जाओ ना जब पर्यंत लक्ष्य तले न पहुंच जाओ जय जगन्नाथ जय हिंद वंदे मातरम। Thank you so much, sir, for such an inspiring speech and for your valuable words. Swami Vivekananda taught us, take up one idea, make that one idea your life, dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. This is the way to success. Let us ignite our minds by listening to the melodious Amar Gatha of Swami Vivekananda. And for this, may I request respected Solomoni Madam along with her team to do us the honor. Please, ma'am. भारत के महापुरुषों में एक नाम जो आता है हम
में गर्व कराता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है जो सारे जग में भारत की पहचान कराता है, विद्वान कहता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी की प्रिय संतान, विश्वनाथ जी पिता ने पाया प्रभु का ये वरदान। कलकत्ता में 12 जनवरी की थी तिथि महान, भारत को गौरवान्वित करने आया जग की शान। नाम नरेंद्र नाथ रखा था समझ के एक नादान, वीरेश्वरा भी पिताश्री ने रखा इनका नाम। पिता अटॉर्नी थे और माता गृह पूजा में रत, इनको कंठस्थ रामायण गीता और महाभारत। पिता की मृत्यु से इनके फिर बिगड़े थे हालात, फाके में भी गुजरे इनके थे कुछ दिन और रात। ज्ञान ध्यान में बचपन से ही मन रम जाता है, प्रभु का हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। विवेकानंद जी महान है, सृष्टि में उनका शान। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। दिमाग था बालक का यह रहती जिज्ञासा, स्मरण करने की शक्ति थी और सीखने की आशा। प्रकृति से इन्हें प्रेम घना था, जनमानस से प्यार। ब्रह्म समाज के प्रति हो गया इनका मन विचार। सन्यासियों के प्रति था इनका बचपन से ही मान, देने में कभी देर न करते ये घर का सम्मान। गौतम बुद्ध भी इनके अक्सर सपनों में आते, अपने प्रिय को छोड़ जगत ये अक्सर बुलाते। कहते हैं भगवान भी इनको दर्शन थे देते, योग साधना और वेदांतों में ये रमे रहते। राम कृष्ण परमहंस का एक दिन संग ये पाता है, उनका हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। विवेकानंद जी महान है, जग में ऊंची शान। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। For the virtual celebration. Everything that is excellent will come when the sleeping soul is aroused to self-conscious activity. No need for looking behind. Forward. We need infinite energy, infinite zeal, courage and patience. Then only will great things achieved. A very hearty good morning to everyone present over here. Respected Principal Sir, beloved teachers and my dear friends. This is Dibyansi Das of Standard 4, feel highly elated to speak about the National Youth Day. The National Youth Day is celebrated on 12th January to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. The main objective of National Youth Day and the reason for its observance is to create a platform for the youth and
address their problems in various spectrums of life. The teachings, philosophies, and ideologies of Swami Vivekananda are propagated through schools, colleges, and universities on National Youth Day. The birth anniversary of Swami Vivekananda and the way he lived his life inspires millions of youth, not only in India but around the world. Swami Vivekananda was born on 12 January 1863 in Kolkata. His father's name was Vishwanath Datta and mother's name was Bhubaneswari Devi. His real name of childhood was Narendranath Datta. He was a great disciple of Ramakrishna Paramhansa. He always said to take risks in life. If you win, you can lead, and if you lose, you can guide. At last, he said goodbye to the world at a very early age of 39 on 4th July 1902. But the great man never died because their thoughts never die. Their thoughts always remain alive. Swami Vivekananda is an inspiration for the youths of today. His birth anniversary is celebrated as National Youth Day. National Youth Day is also famous as Juba Divas. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Let's serve for the nation and uphold the pride and honor of being an Indian. Thank you, everybody. Have a wonderful day ahead. जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। Arise, awake, and don't stop until your goals are achieved. Good morning to each and everyone. Today, I, Divya Rani Raut of class 9th, has got this golden opportunity to speak a few things on National Youth Day.
Well, National Youth Day, also known as Vivekanand Jayanti, is celebrated on 12th January each year. National Youth Day is celebrated to remark the birth anniversary of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was a germ for India, so celebrating his birth anniversary is not less than a grand celebration for the people and youths of India. National Youth Day is a day for the youths to contribute towards the nation. The youths of each country are the strength of their motherland. National Youth Day is a day for us, the youths of India. National Youth Day has its great value in its own way for the youths of India and the whole world. It also spreads awareness between the people and the youths all over the world. The teachings, philosophies and ideology of Swami Vivekanand is spread through universities, colleges and schools on this very day. Swami Vivekanand's life is an inspiration for the million of people, students and the youths in today's generation. In this new era of youths where there is a cutthroat competition between the youths for achieving their goal of life, the followers of Swami Vivekanand are achieving something impossible. And as rightly said by Swami Vivekanand, believing on others is very easy, but believing on yourself is the real challenge. So believe on yourself and your goals. Thank you everyone. To conclude, I would like to end with one of the famous quote of Swamiji. In a day when you don't come across any problems, be sure that you are traveling in a wrong path. Problems, troubles, hurdles are the part of life. Vivekananda taught us to keep striving and struggling to reach success. Let us all follow the footprints of Swamiji. With this, I would like to thank Reverend Principal Sir, respected supervisors, all the faculty members